और चीन ने भी अफगानिस्तान के मुंजमद असासे फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। चीनी सफीर गेंग शुआंग ने सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम आलम को नई अफगान हुकूमत का साथ देना होगा। अफगान हुकूमत से खवातीन और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त करेंगे। चीन अफगानिस्तान में नई हुकूमत की इमदाद जारी रखेगा। Afghanistan's neighbors and countries in its vicinity have actively supported Afghanistan's peace, reconciliation and reconstruction process and made enormous efforts to promote peace and development in Afghanistan. To meet the immediate needs of the Afghan people, China will donate for the first batch 3 million doses of vaccines to Afghanistan, to be followed by another 200 million RMB worth of food supplies and vaccines and medicines on an emergency basis. When security and other conditions are met, China is poised to help Afghanistan build projects that will help improve livelihoods and in so doing support to the best of its ability Afghanistan's peaceful reconstruction economic. China supports the UN in playing a bigger role in alleviating the humanitarian crisis in Afghanistan and helping Afghanistan achieve a smooth transition and embark on the path of peaceful development at an early date. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।